Assalamu alaikum, dear ma'am and respected students. Today my topic is hardware component of computer. Hardware components of computer are monitor, motherboard, central processing unit, main memory, mouse, power supply unit, hard disk drive, keyboard. First of all, monitor. Monitor क्या है? A computer monitor is an output device that display information in pictorial form. मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाती है. मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड and etc. A motherboard is the main printed circuit board in general purpose computers and other expandable systems. It holds and allows communication between many of the crucial electronic component of a system such as the central processing unit and memory, and provides connector for other peripherals. Motherboard कंप्यूटर का मेन हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और ऐसी कई कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ता है और इनके दरमियान कम्युनिकेशन करवाता है. Central processing unit. Central processing unit, also called central processor, main processor, or just processor. It is the electronic circuitry within a computer that executes instructions that make up a computer program. The CPU performs basic arithmetic logic, controlling and input-output operations specified by the instruction in the program. CPU डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है जो कि इसे कंप्यूटर का प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट करता है, और ये डिफरेंट ऑपरेशन से ऑपरेट करता है, जैसे कि अरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट. जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के अंदर दी होती हैं उस हिसाब से एग्जीक्यूट करता है. मेन मेमोरी. In computing, memory refers to a device that is used to store information for immediate use in a computer or related computer hardware device. The term memory meaning primary or main memory. Mouse. A computer mouse is a handheld pointing device that detects two-dimensional motion relative to a surface. The motion is typically translated into the motion of a pointer and on a display, which allow a smooth control of graphical user interface of a computer. माउस एक इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ होता है जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को स्मूथ कंट्रोल करता है और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है. पावर सप्लाई यूनिट. Power supply is an electrical device that supplies electric power to an electrical load. The primary function of a power supply is convert electric current from a source to the current, voltage, current and frequency to the power the load. पावर सप्लाई का काम है कि एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करती है और उसको उस मदरबोर्ड के हिसाब से तमाम हिस्सों में सप्लाई करती है. हार्ड डिस्क ड्राइव. हार्ड डिस्क ड्राइव is an electromechanical data storage device that stores and retrieves digital data using magnetic storage and one or more rigid, rapidly rotating plates coated with magnetic materials. The plates are paired with magnetic head, usually arranged on a moving arm with read and write
data to the platter surface. Keyboard. A computer keyboard is a typewriter style device which uses an arrangement of a button or keys to act as mechanical levers or electronic switches. Keyboard keys typically have a set of characters engraved or printed on them, and each press of a key typically corresponds to a single written symbol. However, producing some symbols may require pressing and holding several keys in sequence. कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि इंफॉर्मेशन को पुट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर कीज़, शॉर्टकट कीज़ और कई फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं।